Hello, good evening. Please type yes if you can hear me. Hello, please type yes if you can hear me. Super. All right. Okay, so let's begin. Let's not waste time. Today's Sunday anyway. It was scheduled on Friday. We're doing it today. So let's start with our analysis. Okay, so we've got about few stocks here that we can discuss. So we'll start with again the bullish setups that we have, and then bearish, and then index. And of course, meanwhile, if you have any stocks, you can put in the chat box as well. Now, हम देख सकते हैं मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड वीकली चार्ट है, मिडिल में डेली चार्ट है, राइट हैंड साइड आवर्ली चार्ट है, सो दैट हम सीपीआर देख सके कहाँ पे. नाउ एपेट इंडस्ट्री अगेन प्री हाइज नहीं टूट रहे हैं, हमारा हमेशा अलर्ट लगा रहा है. एंड वो ट्रेड नहीं मिल रहा है एपेट इंडिया में बुलिश डाइवर्जेंस पे जो हम ढूंढ रहे हैं. अगेन वापस से हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंस है. वापस से देयर इज एन अपटेक and we are looking for narrow divergence, narrow CPRs. Now, of course, try and understand. Monday हमारा trading day है. Tuesday हमारा last trading day of the month है. Wednesday holiday है, and Thursday, Friday again we've got trading days. So because Wednesday एक holiday है right after end of month, Thursday might be a very important day. Now Monday and Tuesday will also act as very important days because वो नया monthly CPR narrow होगा कि wide, वो हमें पता चलेगा. नाउ अगेन हम और आगे जाएंगे तो हमें ये समझ आएगा कि भाई if we go ahead and we analyze all these stocks, we'll also figure out whether we have a narrow weekly CPR for next week, yes or no. All right, so similarly Abbott Industry में अभी भी सेटअप है, वीकली नैरो है, सिंगल लाइन है इनफैक्ट. एंड अगर मैं मंथली सीपीआर प्लॉट करूंगा, you see it's gone below the S1 as well. So first I would like it to go above it. आप मेरा R1 ये alert देखो weekly high पे लगा हुआ है. So again we have to wait, and probably best if we wait for a good monthly CPR also. ठीक है. So ये है जरूर, अगर आपको इंटरेस्ट है इसको आप लगा सकते हो, लेकिन probably not the best place right now. तो मंडे ट्यूसडे देखते हैं, हो सकता है बेटर एंट्री मिल सके. फिर हमारे पास आता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक. वीकली में बुलिश डाइवर था, ऊपर जा रहा है एंड लुक्स ओके. ऊपर गया, ये में पे आया, फिर ऊपर गया लास्ट वीक एंड लुक्स ओके. यहाँ पे एक डायनामिक रेजिस्टेंस है, आप ये जो लाइन देख रहे हो आर्ली चार्ट में भी दिखेगा अच्छे से. एक वहां पे लाइन है, यहाँ पे इसने तोड़ने की ट्राई किया, यहाँ पे रिजल्ट दे भी था. नाउ अगेन इफ इट ओपन्स विद अ गैप अप, you're good to go. Narrow weekly CPR, all of that is healthy and fine. And even daily में यहाँ पे bullish divergence था, gap exhaust हुआ, and this looks good, right? This looks nice and happy chappy. But again Monday Tuesday, जैसे मैंने बोला, क्योंकि Tuesday end of month है, so Monday will play a very important role ये बताने में लिए क्या ये ऊपर जा रहा है और क्या ये डाउन टिक हो जाएगा. डाउन टिक हो जाएगा तो बेरिश डाइवर्जेंस बन जाएगा. देन अगेन यू नीड टू काइंड ऑफ वेट फॉर फ्यू डेज फॉर एनी गुड एंट्री हियर. लेकिन अगर गैप अप से खुलता है या आपको ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी देता है, देन दिस कुड बी अ वेरी गुड
एरिया टू टेक अ ट्रेड, बिकॉज यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर भी बना हुआ है। ठीक है, फिर हम आते हैं जीएनएफसी पे। नाउ जब हम जीएनएफसी पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। वीकली में ऐसा कोई डाइवर्जेंस नहीं है, लेकिन ईएमए नीचे आया, ईएमए पे, और ईएमए पे टेस्ट करके वापस ऊपर जा रहा है। डेली में ईएमए पे था, बुलिश डाइवर्जेंस था, अर्ली चार्ट में 012 वेंट अप। यू डू हैव अ वाइड सीपीआर इन द वीकली चार्ट, सो आई एम नॉट श्योर अगेन मंडे विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगर मंडे एक वीक कैंडल बनाता है तो ये डाउन टिक हो जाएगा एंड देयर विल बी अ बेरिश डाइवर्जेंस इन द डेली चार्ट एट द नेकलाइन ऑफ अ हेड एंड शोल्डर, व्हिच अगेन सजेस्ट दैट द प्राइसेस माइट गो लोअर। तो हमें मंडे ट्यूसडे इसका वेट करना है। मैं इसको इसीलिए लिस्ट में रख रखा हूँ क्योंकि ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। यू नीड टू पे अटेंशन टू व्हाट्स हैपनिंग एट दीज लेवल्स। सो देवर मंथली सीपीआर नैरो था, ऊपर गया, एंड अगेन वेडनेसडे को हमारे पास एक अगर यहीं कहीं बंद होगा तो वाइड मंथली सीपीआर होगा, विच बेसिकली मींस वी हैव टू वेट फॉर नैरो वीकली सीपीआर। ठीक है, फिर हम जाते हैं एमआरएफ पे। नाउ एमआरएफ इंटरेस्टिंगली अगेन अलर्ट नहीं बजा, बिकॉज प्रीवियस वीक का हाई नहीं टूटा, वीकली ईएमए पे है, डेली में बुलिश डाइवर्जेंस है, एंड अपटिक का हाई यहाँ पे टूटा, पोर कैंडल, लेकिन अभी तक वो वीकली हाई नहीं टूटा है। वंस अगेन दिस इज योर डायनामिक रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ एन आर्ली चार्ट। हाउएवर नैरो वीकली सीपीआर है। अगर हम प्रीवियस वीक की बात करें तो ऊपर नीचे हो रहा था, कुछ खास नहीं हो रहा था, एंड अगर हम बड़े if you see the bigger picture, then you can see it's a wide monthly CPR, and hopefully if this triggers and if this goes up and ends somewhere here, you might have a narrow monthly CPR which might give you a decent trade on the upside because of the bullish divergence at weekly EMA. All right, so ये एक अच्छा आपका setup बना हुआ है, so you just keep an eye out for uh, this particular stock for a good day. फिर हमारे पास आता है ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स इसलिए है क्योंकि वीकली ईएमए है एंड डेली में बुलिश डाइवर्जेंस है, एंड ये ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। नाउ ऑफ कोर्स अगेन नॉट अ बैड सीपीआर, नैरो वीकली सीपीआर बनेगा फ्यूचर पिवट के हिसाब से, एंड अगर गैप अप होगा तो गैप अप को यूज कीजिए। लेकिन फ्राइडे का हाई टूटना जरूरी है, बिकॉज अगर आप ये देख रहे हो, ये वाला जो गैप टेस्ट है अगर, और ये पहला कैंडल जो उसके ऊपर बंद हुआ है, तो इसका फॉलो थ्रू मोमेंटम जरूरी है आना। Okay, then we come to Balrampur Chini. Now in Balrampur Chini, you can see there is a weekly bullish divergence, went up, retracement हुआ, तो retracement कहाँ तक हुआ? 61.8%, right? It's a good number. Now वहाँ पे हमारे पास आर्ली में सेटअप था, गैप अप था, सब कुछ था, वाइड वीकली सीपीआर है, यस, इसीलिए हमें वेट करना पड़ेगा कि मंथ एंड हो। सो लेट मंडे ट्यूसडे हैपन एंड देन मे बी यू गेट अ ट्रेड इन द स्टॉक। ऑलराइट, फिर हमारे पास आता है बंधन बैंक। नाउ बंधन बैंक वंस अगेन, इफ यू लुक एट द, लेट मी जस्ट मेक दिस इक्वल, if you look at the weekly chart at support, you have a bullish divergence, right? Decent candle this week, and in the daily chart also we had a bullish divergence, and दो तीन last week पूरा इसीलिए bullish था। Now in the as per the CPR, we do have a very narrowish CPR, or you can wait for the monthly CPR to start. So monthly CPR अगर मैं अभी प्लॉट करता हूँ, ऐसा कुछ है, मतलब ये सीपीआर पे ही है, एंड वीड लाइक इट टू गो अबव द सीपीआर, लेकिन ओपनिंग ऑफ दिस मंथ एंड क्लोजिंग ऑफ द मंथ इज ऑलमोस्ट द सेम, राइट? सेम लेवल पे है, तो आपको नेक्स्ट मंथ नैरो सीपीआर मिलेगा, विच मींस यू विल गेट अ ट्रेंड आउट ऑफ इट, वेदर इट्स अप और डाउन। ठीक है, सो आई अगेन suggest that if you're confused, just wait for a couple of days, wait till the market gives you indication end of the month CPR आने दो, and then फिर ट्रेड करो। फिर हमारे पास आता है एच डी एफ सी ए एम सी। ना एच डी एफ सी ए एम सी में आप देखो वीकली चार्ट एट ईएमए एंड लुक्स लाइक अ करेक्टिव वेव, कितना सुंदर से आ रहा है नीचे। डेली में बुलिश डाइवर्जेंस, एंड you're waiting for you're waiting for something to happen and go higher and all that. Because of the move in the daily chart, you would rather enter at a gap up or a nice monthly CPR or something. So again मैं monthly CPR लगाता हूँ। सो आप अगर आप देखोगे अगेन आपके पास एक नैरो मंथली सीपीआर होगा, उसके ऊपर ले लो, या इवन इफ यू एंटर हैव लाइक अ नाइस रिस्क लाइक बिलो दिस लेवल हियर, सपोर्ट लेवल, इसके नीचे रिस्क रखो, एंड ऑल ऑफ दैट, सो यू कैन टेक अ कॉल देयर एज वेल, बट अगेन एज सेड डेली डाइवर्जेंस एट वीकली ये में देयर इज अ सेटअप हियर। फिर हम आते हैं पीईएल पे, जस्ट अ सेक।
जस्ट अ सेक गाइस, जस्ट अ सेक, एक सेकेंड। हाँ जी। फिर हम आते हैं पीएल पे। पीएल में बुलिश डाइवर्जेंस है वीकली में विद 012, एंड लुक एट दिस कैंडल लास्ट वीक, कितना ब्यूटीफुल। सो 012, एंड अगर मैं थर्ड वेव कैलकुलेट करने की ट्राई करूंगा तो आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट देयर, राइट। सो ये लिस्ट में है कि अगर डिप मिले या कुछ हो तो आप ले सकते हो, बट आई थिंक वी आर टू फार। आई थिंक लास्ट वीक इस ये एंट्री था, इसमें ट्रेड्स थे, पर अदरवाइज अभी हम हटा सकते हैं। आई थिंक मैं हटा देता हूँ इसको। इट्स वी आर ऑलमोस्ट नीयर द टारगेट्स, डजंट मैटर। फिर हम आते हैं नेगेटिव सेटअप्स पे, जिसमें नेगेटिव सेटअप्स बने हुए हैं। अब होगा क्या वो तो ऑफ कोर्स एज ए साइड मंडे ट्यूसडे ही पता चलेगा। तो पहला उसमें से है जेएसडब्ल्यू स्टील। नाउ जेएसडब्ल्यू स्टील, इफ यू कैन सी हियर ऑन द डेली चार्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे बेरिश डाइवर्जेंस था, इट इज गॉन हायर। लुक एट दिस, फॉल्स ब्रेकआउट लग रहा है, ब्रेकआउट हुआ एंड देन नेक्स्ट डे द एंटायर कैंडल डार्क क्लाउड कवर बन के पूरा फॉल्स हो गया। एंड अगर ये मंडे को डाउन टिक हो जाता है, देन दिस आल्सो सजेस्ट दैट द प्राइसेस माइट फॉल लोअर। नाउ you do have a narrow CPR in narrow weekly CPR in the hourly chart, so you can use that. Or you can of course wait for a couple of days and see where the monthly CPR ends up. So if you see the monthly CPR यहाँ पे है, so अगर ये मंडे ट्यूसडे यहाँ तक आ जाए तो again you will have a narrow monthly CPR to take a trade after Tuesday. ठीक है, ये लिस्ट में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबल डेली में बेरिश डाइवर्जेंस है, और यहाँ पे दिख रहा है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। ऑलराइट, क्योंकि हमें मोमेंटम चाहिए तो हमें वेट करना पड़ेगा फॉलो थ्रू का। फिर हम देखते हैं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक आप देख सकते हो वीकली ये में, डेली में बेरिश डाइवर्जेंस है, राइट, टिक डाउन है, एंड द प्राइसेस माइट फॉल। नाउ ऑफ कोर्स यू नीड मोर कन्फर्मेशंस, वीकली सीपीआर वाइड होगा। अगर आप क्या, इज इट सेफ टू से, जैसे लास्ट वीक भी वाइड सीपीआर था, साइडवेज चला है, इस वीक नैरोअर है लेकिन बहुत नैरो नहीं है। तो क्या इज इट सेफ टू से वी कैन चेक द मंथली सीपीआर? एक्सक्यूज मी, yes, will be a wide monthly CPR also, है ना? So let's see how we get monthly CPRs at the end of Tuesday. But yeah, this is in the list because it has a bearish divergence in the daily chart. फिर हम आते हैं मारुति पे ना। मारुति में इंटरेस्टिंगली देयर इज अ वीकली बेरिश डाइवर्जेंस, सेंसर्ड है, श्योर, नो प्रॉब्लम। डेली चार्ट में देयर इज अ ट्रिपल बेरिश डाइवर्जेंस विच RSI divergence as well, and ये फ्राइडे का टिक डाउन था। Now, if you're looking to sell, short sell this, then this is your resistance, this is your wide CPR. Now, if I plot द मंथली सीपीआर, अगर ये यहाँ पे भी बंद होगा तो ट्यूसडे के बाद हमें नैरो मंथली सीपीआर मिल जाएगा, एंड यूल गेट अ डिसेंट ट्रेड आउट ऑफ इट। हाउएवर इफ यू वांट टू यूज द सीपीआर दैट इज, और वीकली सीपीआर हमारे पास नैरो है, प्रीवियस वीक वाइड था, इस बार नैरो है, सो यू कैन यूज द वीकली सीपीआर टू टेक अ ट्रेड इन दैट केस। ऑलराइट, बट मारुति में आपको दिख रहा है देयर इज अ नाइस डाइवर्जेंस, इट माइट गिव यू अ गुड मूव इफ यू नॉट ऑलरेडी एंटर्ड, क्योंकि लेट मी गो बैक टू मारुति, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बेरिश डाइवर्जेंस विद 012 सेटअप था अर्ली चार्ट में, राइट। सो इसका भी टारगेट अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, सो इट्स समवेयर हियर, डेली ईएमएस, राइट। फिर हम आते हैं जिंदल स्टील पे। नाउ जिंदल स्टील डेली में डाइवर्जेंस है विद RSI डाइवर्जेंस, एंड वीकली इज ऑलराइट, एंड नैरो सीपीआर इन द hourly chart. You can see weekly CPR narrow है, and you can probably use that to enter a trade as well. Okay, so this is in the list because it has a daily bearish divergence. Then we come to LIC Housing Finance. LIC Housing Finance resistance पे है, there is a bearish divergence with a tick down on Thursday, and you did not have a follow through on a Friday. ठीक है, so daily में divergence है, एक resistance पे है, हो सकता है यहाँ तक आ जाए to create another shoulder kind of a setup. नैरो सीपीआर है, सो इफ यू गेट अ गैप डाउन और समथिंग, या कुछ भी सजेशन होता है जिसमें वीकनेस दिखता है, तो दिस कुड बी अ डिसेंट ट्रेड ऑन द डाउन साइड। देन वी हैव एलटी। नाउ एलटी अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, ये हमारे पास लिस्ट में था लास्ट टाइम भी। वीकली में बेरिश डाइवर्जेंस है, टिक डाउन हो रहा है, कब से यहाँ पे सेलिंग हो रहा है। फिर ये पहली बार ईएमए पे आया, ईएमए पे हमारे पास बेरिश डाइवर्जेंस है अर्ली चार्ट में, एंड इफ आई प्लॉट द अर्ली चार्ट, अर्ली के R1 पे डाइवर्जेंस था, एंड मंथली सीपीआर भी वहीं पे था, राइट। सो अगेन लेट मी गेट आउट ऑफ दिस, या मंथली सीपीआर अगर यहीं पे कहीं एंड होता है, देन वील हैव अ नैरोअर मंथली सीपीआर आई थिंक,
Well, we just get to know later. And future CPR, as you can see, it is a narrow CPR in the early chart, narrow weekly CPR. So we can use that to enter on the downside as well, because it suggests engulfing bear bana hua hai at EMA, and if the low breaks, you can expect prices to go lower. और डेली में आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे शोल्डर, हेड और एक शोल्डर की तरह यहाँ तक आना चाहिए। फिर हमारे पास आता है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में वीकली में बेरिश डाइवर्जेंस है, डेली में बेरिश डाइवर्जेंस है, एंड बट द वीकली सीपीआर इज वाइड। ठीक है, सो बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी होगा अगर आप इस सपोर्ट लाइन को बना लो आर्ली चार्ट में। ठीक है, एंड वी कैन चेक आउट दी मंथली सीपीआर कि ये कहाँ पे नैरो सीपीआर है, R1 तक गया, यहीं पे आ गया ओपनिंग के पास। सो यहाँ पे आपको अगर यहीं कहीं था तो आपको you'll get another narrow CPR next month, which is after Tuesday. Okay, so this is what MFSL brings you as well, daily and bearish divergences. Then we have M&M. Now in महिंद्रा एंड महिंद्रा आप यहाँ देख सकते हो वीकली में वेल शेडी डाइवर्जेंस बट सेंसर्ड इज वेल। ठीक है, कोई बात नहीं, इंगल्फिंग बेयर है, पुअर कैंडल। डेली में डाइवर्जेंस है with a pullback and a 012 and engulfing bear once again. So again, this suggests that the prices might fall. You have a narrow, well, not narrow CPR, but decent CPR. And अगर मैं monthly CPR लगाऊंगा, तो be plenty of time to go. All right, but yes, you do have a setup here with a 012 in a daily chart, and weekly में just a poor week. फिर हम नवीन फ्लोरीन में आते हैं। नवीन फ्लोरीन में एट वीकली EMA ये ऊपर गया, सेंसर्ड वीकली डाइवर्जेंस था, ऊपर गया, एंड यहाँ पे हमारे पास डेली में बेरिश डाइवर्जेंस है। नाउ लास्ट टाइम भी हमने देखा कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट अगर हमारे पास मंथली CPR हमें हेल्प कर दे, देन दिस थिंग रियली वर्क्स। सो अगर हमारे इफ यू कैन वेट फॉर कपल ऑफ डेज एंड ये थोड़ा कुछ साइडवेज वगैरह चल जाए, यहाँ तक आ जाए कहीं, एंड वी गेट अ नैरो मंथली CPR on a Wednesday, then I think it will be a nice trade on the downside for a re-entry opportunity. ठीक है, फिर हम आते हैं रैमको सीमेंट पे। रैमको सीमेंट हमारी लिस्ट में इसलिए है क्योंकि आप देखो यहाँ वीकली चार्ट में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है विच इज बेसिकली अ सपोर्ट लेवल। वहां पे डेली में बुलिश डाइवर्जेंस है, ठीक है, एंड बुलिश रामी कैंडल, and you have a narrow CPR here. Let me just do a no sync, just to say I don't want early chart. Okay, and we have, if you can see the daily chart, ये लगता है double bottom with a divergence, and it basically suggests that the prices might go higher. Now for that we do have a narrow weekly CPR, and if I plot the monthly CPR, you can see we do have a narrow monthly CPR S1 यहाँ पे था जहाँ पे divergence है, and hopefully by Tuesday Wednesday यहीं तक रहे, and then we have a narrow monthly CPR once again to suggest the prices कि ये ऊपर जा पाए. All right, so I think I've just this is a bullish setup. I need to just put it on the upside here. Then हम आते हैं SBI कार्ड एंड पेमेंट पे। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट वीकली में बुलिश डाइवर्जेंस है, पास्ट फ्यू वीक से ये हमारी लिस्ट पे है। डेली में 012 था, ऊपर चला गया। नाउ यू नीड टू वरी अबाउट दिस कि डेली में बेरिश डाइवर्जेंस है HNS के नेकलाइन पे। सो देयर इज अ हेड एंड शोल्डर इन द डेली चार्ट, राइट, एंड यहाँ पे टिक डाउन हो रखा है। अगर ये नीचे की ओर गया, मतलब फॉलो थ्रू दिया नीचे की ओर, तो ये प्राइसेस कैन फॉल फर्दर, लाइक टू क्रिएट अ 012 इन द वीकली चार्ट। लेकिन अगर ये खाली EMA तक आके और फिर ऊपर चला गया, then you might look for a buying opportunity later on. All right, but again, as I said, if you can see this support level made a high weekly chart में, support पे आया, फिर lower high, फिर support पे आया somewhere here and then goes back down. This is what it suggests कि ये lower highs, lower highs, lower highs, every bounce creating lower highs. So this basically suggests that the prices might not really go higher. But nonetheless, we need to wait for Monday and Tuesday to give us an opportunity here as well. फिर हम आते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट पे। Now, if you can see here again, head and shoulder. Now, this is in the list because either way, this could be like a breakout of the head and shoulder. But आप देख रहे हो ये नेकलाइन पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, हैमर, 2 हैमर बन चुका है यहाँ पे with a probable bullish divergence. अगर Monday it gives you a nice uptick, and Tuesday onwards, yeah, Wednesday onwards, when you have a new monthly CPR, you can expect prices to go higher. All right. Now, if I plot
the monthly CPR, you can see it's a wide monthly CPR, और next month जरूर narrow monthly CPR मिलेगा because opening and closing are almost nearby, right? तो ये हमें ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा. मे बी मंडे ट्यूजडे आर वेरी इंपॉर्टेंट. दिस मंडे ट्यूजडे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर a lot of these stocks. Okay, so that's about it for the stocks. I'm going to go on to talk about Nifty and Bank Nifty in a minute. Meanwhile, if you want me to look at any particular stock, please put it in the chat box and I will definitely have a look. Okay, all right. So let's go to Nifty and Bank Nifty quickly. So I've got Nifty here. ठीक है, अच्छे से समझते हैं इसको. So if you can see here, I have a bearish divergence in the weekly chart. हमने ये जो last week बताया था कि Monday we are looking to sell short, and ये वही हुआ, and then again this week it bounced back. All right. Now if we go to the daily chart, अब मंथली भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि 2 दिन में मंथ भी खत्म होगा. मैंने मंथली के बारे में बताया था आपको कि ये अक्टूबर से लेके अभी भी कोई भी मंथ का लो नहीं टूटा है. सो अभी तक वो ट्रेलिंग चल रहा है. तो वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ इट ब्रेक्स द लो देन इट माइट करेक्ट अ वी बिट. तो वो लो टूटने का भी वेट करना जरूरी है. और अगर निफ्टी ऐसा ही कुछ बंद हो गया डोजी, सो आप यू कैन सी बिग कैंडल्स, डोजीज, कंफ्यूजन कैंडल्स, डोजीज बन रहे हैं. तो इट्स नॉट द बेस्ट कैंडल्स और प्राइस एक्शन दैट वी आर सीइंग हियर. इट इज जस्ट क्लोजिंग प्राइसेस हमेशा हर मंथ ऊपर है. वीकली चार्ट में जैसे मैंने बोला प्रीवियस आई मीन 8 अप्रैल वाला वीक बेरिश डाइवर था, एंड वी वर होपिंग फॉर अगेन पुअर परफॉर्मेंस, एंड वो हुआ. एंड देन दिस वीक इट जंप्ड बैक. सो लेट्स गो टू द डेली चार्ट. नाउ डेली चार्ट इफ यू कैन सी हियर, राइट, यहाँ से ये गिरा एंड देन इट हैज बाउंस्ड बैक. देयर इज अ गैप हियर. सो इफ आई कैन मेक दिस मे बी बिगर लाइक दिस, एंड मैं आपको दिखा सकूं, यहाँ पे एक डेली में गैप है. ठीक है, अभी तक वो गैप एग्जॉस्ट नहीं हुआ है. ठीक है, ये 2 गैप्स थे, ये वाला गैप एग्जॉस्ट हो गया, ऊपर गया, ये वाला गैप एग्जॉस्ट नहीं हुआ है. सो इन दिस केस इफ इट फॉलोज थ्रू ऑन द डाउन साइड, मतलब ये अगर बहुत खराब डार्क क्लाउड कवर है नहीं, खाली ऊपर खुल के नीचे बंद हो गया, इफ इट फॉलोज डाउन साइड then there is a potential downside to it as well. Now to explain this, ये समझाने के लिए let me open all the time frames. ठीक है, सो आपको डेली में गैप दिख रहा है ना. आर्ली चार्ट में आप देखो, monthly R1 पे there is a bearish divergence here, uncensored, there is a resistance here, all of this is like right there. and hourly chart का gap जो बना था फ्राइडे को, वो एग्जॉस्ट हो गया. दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग. सो अगर ये गैप डाउन खुलता है या कहीं से भी इधर 012 करके एक falling pressure आता है second half of the market on Monday, then Monday, Tuesday again, as I suggest, it would suggest that the prices might fall lower. अब just because हमारे पास expiry था last week, हम एक बार, it's a good practice to go and check out spot Nifty. ठीक है, तो आपको बेटर प्राइस एक्शन दिखाएगा. ये देखो, excellent, you can see here, beautiful, this is a much better chart बिकॉज एक्सपायरी के कारण वो प्रीमियम ले रखा है. यहाँ देखो 78.6% का रिट्रेसमेंट है वीकली डाइवर्जेंस पे, अभी भी टिकिंग डाउन है. पुअर कैंडल, कंफ्यूजन कैंडल इन द वीकली चार्ट, एंड डेली हैज अ गुड डार्क क्लाउड कवर. आर्ली में अच्छा खासा बेरिश डाइवर्जेंस है. इसमें कोई गैप वैप है नहीं, तो ऑलरेडी है सेटअप. दिस इज अमेजिंग, राइट. सो रिट्रेसमेंट 012 अगर है, इसके रिट्रेसमेंट पे यू हैव एन आर्ली बेरिश डाइवर्जेंस. नाउ इफ आई प्लॉट द फ्यूचर पिवट हियर, you see I don't know, this is monthly, weekly. ठीक है, weekly is a narrow CPR, right. आपको दिख रहा है narrow CPR है, single line CPR. and also अगर मैं इसमें monthly लगाऊंगा, let me go to the monthly CPR, considering 2 दिन कुछ नहीं हुआ अगर, तो भी narrow monthly मिलने वाला है. इसका मतलब नेक्स्ट मंथ हमें कुछ ना कुछ मूव मिलेगा. नेक्स्ट मंथ मतलब मई मिलेगा. राइट, सो लेट मी गो बैक टू दिस एंड yeah. All right, so this suggests that there is, well, we are hoping for a weakness in Nifty, but only if it breaks the low of Friday, and that is suggestive. इसके बाद ना हम क्या करेंगे, हम एक बार ग्लोबल मार्केट्स देखेंगे जस्ट टू शो यू दैट. मैंने जब लास्ट टाइम भी बोला था कि आई एम सेंसिंग वीकनेस इन द मार्केट्स, मैंने क्यों बोला था, ताकि आप समझ पाओ और आप इंडिपेंडेंटली इसको खुद कर सको. राइट, सो दैट इज व्हाट माय प्लान इज फॉर निफ्टी हियर. नाउ क्विकली लेट्स कम टू बैंक निफ्टी.
बैंक निफ्टी फिर हम एक बार मंथली चार्ट देखते हैं। मंथली चार्ट में आप देख सकते हो कि बार बार कंफ्यूजन कैंडल्स बन रहे हैं, हायर हायर लोज बन रहे हैं। लो टूटना जरूरी है, मंथ में 2 दिन बचे हुए हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वीकली चार्ट में डोजी बना एट रेजिस्टेंस, सो दिस इज माय रेजिस्टेंस, राइट? सो डोजी बना again big doji here and then just a white candle here which is again not the best candle here. तो फिर हम डेली चार्ट में आते हैं, क्योंकि वीकली और मंथली में कोई डाइवर्जेंस बोल के अभी तक है नहीं। डेली में आते हैं, डाइवर्जेंस नहीं है, लेकिन अगेन आप देखो यहाँ पे एक गैप डाउन है और यहाँ पे पुअर कैंडल है which could be a gap test, and hourly chart में I have a bearish divergence with a RSI test also which is again मतलब super opportunity that I can see here. Monthly of course changes after 2 days, R1 के अंदर घुस जाएगा तो ऐसे भी वो खराब हो जाएगा। अब हम क्विकली एक बार मंथली हटा के, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ सीपीआर को, एंड फ्यूचर पिवट लगाते हैं। सो लेट मी जस्ट गेट इट ऑफ सीपीआर। आई थिंक दिस इज मंथली, दिस इज, लेट्स मेक इट वीकली। वीकली नैरो सीपीआर है जो कि इस रेजिस्टेंस, ये जो आर्ली में मैंने बना रखा है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इसके नीचे है। अगर ये सीपीआर के नीचे जाता है, आप देख रहे हो मेरा अलर्ट भी वहीं लगा हुआ है, सो आई वुड बी इंटरेस्टेड इन थिंकिंग अबाउट टेकिंग शॉर्ट सेल पोजिशंस, ओके, बिकॉज ये गैप टेस्ट हो रहा है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप चाहोगे कि नहीं मुझे 2 दिन नहीं करना है, मंथ एंड होता है, लेट मी फाइंड अ गुड मंथली सीपीआर एंड देन टेक अ ट्रेड, दैट इज ऑल्सो फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। ऑलराइट, सो टेक दैट कॉल अकॉर्डिंगली। नाउ अगेन इसमें भी जैसे मैंने बोला एक गुड प्रैक्टिस है, बिकॉज हमने अभी भी एक्सपायरी देखा है कि बैंक निफ्टी का हम स्पॉट चार्ट देखिए, है ना? तो स्पॉट चार्ट देखते हैं, फिर अगेन वीकली में जाते हैं। वीकली देख लो, नॉट द बेस्ट कैंडल, राइट, नॉट द बेस्ट कैंडल। डेली में आते हैं। नाउ डेली में यू कैन सी गैप पे एग्जॉशन नहीं हुआ है, टेस्ट हुआ है। इनफैक्ट दिस इज अ डिसेंट डार्क क्लाउड कवर ऑल्सो, प्रिटी डिसेंट। एंड आर्ली चार्ट में आप देखो देयर वाज अ बेरिश डाइवर्जेंस and the market fell. Now, if I plot the CPR, ये एक्चुअली इधर से आ रहा है, ठीक है, स्पॉट चार्ट है। Now, if I plot the CPR, let me just get it here. यही लाइन, ये जो मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना रहा हूँ, यही लाइन पे CPR भी है। So if I plot the CPR, this is my future pivot, monthly cancel, फ्यूचर पिवट लगा हुआ है, वीकली नैरो सीपीआर है। और अगर मैं इस बार का भी दिखाऊं तो मंथली नैरो था, इस ऊपर गया, पिवट पे आया, फिर R1 पे गया। R1 के नीचे अगर आता है देन अगेन यू कैन एक्सपेक्ट प्राइसेस टू गो लोअर, ऑलराइट। और अगर कहीं इस लेवल पे आ गया बिफोर द मंथ एंड्स, देन यू विल गेट अ नैरो सीपीआर अगेन इन द मंथली चार्ट आल्सो, ठीक है। सो एज आई सेड, आई सेंस वीकनेस राइट नाउ, बट देयर इज प्लेंटी ऑफ न्यूज, इलेक्शंस हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे। टेक्निकली वीकनेस है, लेकिन बाई चांस, अब मैं ऐसे ही हाइपोथेटिकली बोलता हूँ, अगर गैप अप खुल गया मंडे और गैप अप खुल के ये ऊपर जाने लगा, देन वी जस्ट हैव टू वेट एंड मे बी टेक लॉन्ग पोजिशन अकॉर्डिंग टू सीपीआर, बिकॉज बुलिश डाइवर्जेंस तो कहीं है नहीं। सो वील जस्ट वेट एंड सी इफ इट गोज हायर, क्रिएट अ बेरिश डाइवर्जेंस हियर और समथिंग, और जस्ट एग्जॉस्ट द गैप एंड देन वी कैन टेक अ ट्रेड अकॉर्डिंगली, ठीक है। एंड ऑल ऑफ यू नो हाउ टू टेक बीएनएफ ट्रेड्स अकॉर्डिंग टू सीपीआर इन 2 टाइम फ्रेम्स, तो आपने जो सीखा है उसको अप्लाई कर सकते हैं। बट कंसिडरिंग डेली वीकली चार्ट्स, डेली आर्ली चार्ट्स, वीकनेस ज्यादा दिखता है। Okay, so that's Nifty, Bank Nifty. Let's come up with the stocks. All right, I've got stocks here, so let me open the stock layout. I've got Hind Petro. Before I do that, let's just open quickly global markets, है ना? हम स्पेशली डाउ जोन्स एंड ऑल खोलते हैं। नाउ वीकली में आप डाउ जोन्स को देख रहे हो, बेरिश डाइवर्जेंस था, ईएमए तक आ गया। डेली में दिस इज व्हाट्स हैपेंड, इट वेंट टू ईएमए, इट्स गॉन डाउन, यहाँ पे गैप था, ये गैप टेस्ट हो रहा है। आप आर्ली चार्ट में देखो गैप टेस्ट हो रहा है, राइट? नाउ इफ दिस काइंड ऑफ क्रिएट समथिंग एंड ट्यूसडे ऑनवर्ड्स नीचे गिरा जस्ट टू क्रिएट इवन अ बुलिश डाइवर्जेंस एट वीकली ईएमए, तो भी इसको एक बार नीचे एक पुश आना चाहिए। नाउ लुकिंग एट दिस, it seems like this might like fall a wee bit and give you short selling opportunities. However, uh let's not predict, let's just react. So let's see what happens on Monday and Tuesday and then we'll talk about this. Similarly, I have a German index also, DAX. Just quickly देख लेते हैं। डेली नीचे गया, डेली वीकली ईएमए, डेली ईएमए पे, and then it took support. So इसमें कुछ नहीं है, but just talking about Dow Jones itself, a little
maybe weakness unless this gap exhausts. So maybe a spike here creates a bullish dive and then कुछ मजा आए, then हमारा भी market उसको follow अगर करे, so nothing like it. So that is possible, but उसको होने में I think a matter of um few days, maybe Monday, Tuesday, what you're talking about. Anyway, let's come to the stocks that you want me to have a look. So first is Hind Petro. Hind Petro weekly is all right. See, for me, weekly is okay because EMA पे आया and all that. But आप देखो बार बार ये higher wicks भी है यहाँ पे, मतलब higher prices नहीं accept हो रहे हैं. And this looks like a corrective wave, मतलब 0, 1, 2, 3 and all that. So it looks like a corrective wave in a daily chart, and that is just not pleasing. So is it the best setup that I would like to enter? Probably not. Okay. Let's check the monthly chart. Why do you have this? Hind Petro, I mean, this is what my opinion is. Like, it's actually moving just like a corrective wave. CUB. CUB में था यहाँ पे setup. So if you see, जब ये EMA पे आया था, this is on a Friday. There was a bullish divergence in the early chart. You see this, and the prices went higher, right? However, as I said, tick down होने पे भी censored रहेगा, I think. So I don't know how Monday will come, but it looks okay, यार. To be honest, अभी कोई opportunity है नहीं, यहाँ पे था a fresh opportunity because this falling gap is also exhausted. It just needs like a momentum on the upside. आप CPR यूज कर सकते हो या आप वेट कर सकते हो कि ये EMA पे आए और फिर आप इसको अपॉर्चुनिटी ले लो. ठीक है, either way you might have to just wait for a bit in CUB. SDBL. SDBL is good यार. I mean, ठीक है, इतना बढ़ भी गया तो एक दिन अगर खराब भी हो गया तो ऐसा भी कुछ खराब नहीं हुआ इस फॉल के कारण. But technically speaking, weekly bullish divergence going up, monthly EMA, and if it अगर ये with the trend trades है तो basically the logic is कि EMA फिर high ऐसे करके जाएगा. तो लेट्स सी क्या होता है. लुक्स ओके राइट नाउ. मुझे कोई कंप्लेन नहीं है इस पर्टिकुलर स्टॉक से. आई डोंट सी अ प्रॉब्लम. आई डोंट नो फंडामेंटली क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया, बट एवरीथिंग एल्स इज ऑलराइट. FSC. और FSC आई डोंट नो यार, ये पहले भी क्या हमने डिस्कस किया है. You need to check fundamentals for this stock here because I think if it is fall, it is like gone. मतलब 6 रुपए का स्टॉक हो गया यार. Is this what you're talking about, this particular stock FSC? बिकॉज अगर ये है तो अगर फंडामेंटली कुछ है तो पता नहीं. टेक्निकली तो अभी कुछ नहीं है यार. 6 रुपए भी चल रहा है, वो भी और कम हो जाएगा कि नहीं पता नहीं. सो देयर इज नथिंग टू डू हियर फॉर मी इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. ऑलराइट, देन वी हैव डिलीवरी. Right, let's go back to weekly chart. So weekly bed, fair enough. Monthly में कहाँ है? अभी ये इसका पॉइंट ऑफ यहाँ से खुला है. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. सो ये गया ऊपर, ब्रेकआउट हुआ, ना इट्स कम बैक टू रेजिस्टेंस. यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस बना रहा है बट गिर नहीं रहा है. सो यू कैन प्रॉब्ली डू ड्रॉ रेंज. आई थिंक इट्स वर्किंग इन अ रेंज. आई डोंट नो, मे बी यहाँ से it's working in this range here. So maybe it's consolidating. So either way, जब breakout होगा you can take a trade. But this is, ये जो orange line मैंने बनाया वीकली चार्ट पे, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इसका. ठीक है, दैट इज अ मेजर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब अगर ये ऊपर की और वीकली लेवल पे ब्रेकआउट हो गया देन इट माइट गो हायर. अगर यहाँ से नीचे आ गया तो देन इट माइट गो लोअर. ठीक है. वाओ, एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस पिंक लिस्ट पे है इसका, मतलब वी आर वेटिंग फॉर समथिंग हियर. सो लेट्स स्टार्ट विद मंथली चार्ट. हाँ, स्टार्ट विद द बुलिश. ठीक है, डजंट मैटर. वीकली चार्ट, वीकली एट EMA. There's no such bullish divergence. ठीक है, I mean, वीकली EMA होल्ड करेगा, पहले एक कैंडल बनाएगा, इसका हाई टूटेगा तभी ये ऊपर जाएगा. सो इट वेंट हायर. इतना ऊपर गया, EMA तक आया, फिर टिक टक टिक टक. इतना ऊपर गया, फिर EMA तक आया, फिर टिक टक टिक टक. सो इट शुड, मतलब दैट इज व्हाट looks like. But best is if you find a divergence somewhere, then you can enter this, re-enter this, or enter this. India Bulls Housing.
Indiabulls Housing Finance Limited. I've got two. Indiabulls Housing Finance. I think this is the one. Indiabulls Housing Finance वही रेंज में चल रहा है, देखो मैंने बना रखा है. बेरिश डाइवर्जेंस था यहाँ पे, ट्रिपल बेरिश डाइवर्जेंस, मार्केट्स आर फॉलिंग, एंड डेली चार्ट में भी अभी कोई डाइवर्जेंस नहीं है. सो अनलेस इट ब्रेक्स आउट ऑफ अ रेंज, आई एम नॉट श्योर. मंथली चार्ट में देख लेते हैं. Yeah, again, unless it, I think it's almost there to kind of suggest a breakout, but that might happen. You need that 1 month or 1 week to give you that kind of a breakout. So अभी वो नहीं है, वो अभी रेंज पे ही चल रहा है. अगर फिर मैं मंथली चार्ट दिखाऊं आपको और क्लियरली दिखेगा. यू सी हियर. सो यहाँ से गया ऊपर नीचे, एंड यहाँ पे फिर यहीं चल रहा है. सो इफ एट 0 1 2 2 पे डाइवर्जेंस काइंड ऑफ अ सेटअप. So 0 1 2 3 and 4 5 और यहाँ पे bearish कुछ करके, but it has to break out this range. This trend line has to break out. That is what uh, I would suggest anyway. Wheels India. हाँ, Wheels India में bullish divergence है, ठीक है. Some stocks might take longer than the others. So monthly chart अभी भी EMA पे है. So यही हुआ है, ऊपर गया नीचे आया, हमें लगा ये खत्म हो गया, लेकिन अभी भी नीचे आ रहा है. So you need 1 month to kind of be a good month and then it'll be fine. So यहाँ पे हमारे पास वीकली में बुलिश डाइवर्जेंस था शायद. डेली में भी अभी रिसेंटली बुलिश डाइवर्जेंस 0 1 2 है. सो इफ यू सी डेली चार्ट, बुलिश डाइवर्जेंस 0 1 2, एंड होपफुली इट ब्रेक्स आउट. आई डोंट नो. या वीकली में भी बुलिश डाइवर्जेंस है. इज दिस 0 1 2? आई डोंट नो, क्योंकि कैंडल तो नहीं सजेस्ट कर रहा है. वीकली कैंडल इज नॉट दैट गुड. इसका सीपीआर एक बार लगाते हैं मंथली. हाँ, सो देखो मार्च खत्म हुआ था, हमने यहाँ डिसाइड किया था. अभी अप्रैल में मंथली सीपीआर के ऊपर बंद होके अच्छे से फॉलो थ्रू नहीं दिया. सो वो भी अगर हो जाए अप्रैल में या मई में, जब हमें नया सीपीआर मिलेगा, नैरो सीपीआर, उसमें हो जाए, तब अगर उसके ऊपर गया देन दिस इज गुड. व्हील्स इंडिया. यप. देन वोडाफोन. ओ यार, मैं ये नहीं, मैंने देखा था ये वाला अभी स्कैनिंग के टाइम. फिर भी चलो देखते हैं. वोडाफोन इंडिया वीकली कैंडल इज गुड बिकॉज ऑफ कोर्स इट हैज ओन फंडामेंटल पैरामीटर्स जो अभी आए थे इसके. मंथली इज ऑल्सो ऑल राइट, ऊपर गया मंथली ये में. अगर 2 दिन पे ऐसे ही रहा तो नथिंग लाइक इट. वीकली इज ऑल राइट. डेली में डबल टॉप बुलिश डाइवर्जेंस बोल सकते हैं. तो लेकिन इसको फॉलो थ्रू चाहिए ना, है ना. सो अगर मैं फिर यहाँ पे एक सीपीआर लगाता हूँ, तो ये तो सिंगल लाइन है अभी. 2 दिन और रुक जाओ, एक नैरो सीपीआर आने दो, एंड देन मे बी टेक अ कॉल. ठीक है. बट अकॉर्डिंग टू द वीकली कैंडल it looks all right, but it needs a follow through. मतलब above this high of the previous week, वो उसके ऊपर जाए तब मोमेंटम पता चलेगा, बुल्स की तरफ ही होगा. IEX इज प्रीटी गुड. आई वुड वेट 2 दिन और. मतलब मैं चाहता हूँ 2 दिन और कुछ नहीं हो इसमें, मतलब साइडवेज चल जाए या कुछ, मतलब मंथ खत्म हो जाए बस इसी तरह, तो हमें मिल जाएगा. IEX से एक चीज देखियो, यहाँ पे एक तो गैप टेस्ट करने आ गया वापस, लेकिन यहाँ गिरा, यहाँ गैप टेस्ट किया, यहाँ आया वापस गैप टेस्ट किया. नाउ दिस, लेकिन यहाँ पे कुछ अभी तक हुआ नहीं है. अगर टिक डाउन होता है देन ठीक है, चलो सोचने की बात है, लेकिन अभी टिक डाउन हुआ नहीं है. मंथली चार्ट में यहाँ पे 0 1 2 का प्रोबेबिलिटी है. इफ यू सी हियर, डाइवर्जेंस ऊपर गया, पुल बैक EMA तक, एंड देन दिस माइट सजेस्ट प्राइसेस टू गो हायर. लेकिन लेट द मंथ फिनिश, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टॉक्स पहले ही घूम जाता है, पहले ही कुछ हो जाता है. सो लेट इट फिनिश. एंड डेली चार्ट में भी इफ आई ओपन द CPR अगेन, हाँ वाइट सीपीआर था, अभी भी शायद वाइट ही होगा नेक्स्ट मंथ. सो लेट्स सी क्या होता है. 2 दिन मैं वेट करूंगा, बट एवरीथिंग एल्स टेक्निकली लुक्स गुड, लुक्स बुलिश अनलेस दिस टिक्स डाउन. जब तक ये टिक डाउन नहीं होगा तब तक ठीक है. शिवालिक बाई मेटल. शिवालिक बाई मेटल. ऑलराइट. या वीकली बुलिश डाइवर्जेंस, मंथली चार्ट एक बार देख लेते हैं. एट मंथली ये में विद अ गुड सेटअप, ये हमारे ग्रीन लिस्ट में आ जाएगा प्रॉब्ली. डेली इसमें देखने का कोई फायदा नहीं है, वैसा स्टॉक नहीं है, बट यस लुक्स लाइक इट, है ना. बेस बना रहा है या कंसोलिडेट हो रहा है. सो यू कैन प्रॉब्ली ड्रॉ योर रेक्टेंगल हियर एंड वेट फॉर अ ब्रेकआउट और फॉलो थ्रू और व्हाटएवर. MCX. MCX में आई थिंक देयर वाज अ बेरिश डाइवर्जेंस अर्लियर. यहाँ पे टिक डाउन हुआ था फ्राइडे 19 अप्रैल. यहाँ पे तो डाइवर्जेंस बना नहीं था, फिर यहाँ टिक डाउन हुआ,
दिस वाज आल्सो डबल बॉटम डबल टॉप काइंड ऑफ थिंग, अभी तक हुआ नहीं है इसमें बेरिशनेस कुछ, बढ़ रहे तो बढ़ वही है, बढ़ रहे तो बढ़ने दो। आई थिंक दिस वाज इन माय ब्लू लिस्ट और समथिंग बिकॉज ऑफ अ प्रोबेबल 012 और मे बी आई डोंट नो ट्रिपल, इस ये था कि इसका टिक डाउन होने से, लेकिन हुआ नहीं। जब भी टिक डाउन हुआ दिस वन आल्सो लो नहीं टूटा, वीकली का भी लो नहीं टूटा, सो देयर वाज नो ट्रेड हियर अर्लियर। बट यस, अभी आप क्या कर सकते हो, लुक्स ऑल लुक्स गुड। आप एक क्लासिकल चार्टिंग के लिए रेजिस्टेंस बना सकते हो मे बी, मैं होता ऐसा बनाता। सो इफ इट कम्स बैक टू टेस्ट दिस लाइक अ चेंज इन पोलैरिटी एंड गोज हायर देन फेयर इनफ। अगर डाइवर्जेंस बना देता है डेली चार्ट में थोड़ा सा समझ जाना, बट दैट्स अबाउट इट फॉर एमसीएक्स आई थिंक। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, sorry, ICICI Lombard. Yeah. वीकली इज ऑलराइट, डेली कंसोलिडेट हो रहा है। वीकली में भी देखो यार, प्रीवियस रेजिस्टेंस है इसमें, मंथली देख सकते हैं, एक बार मंथली देख लेते हैं। हाँ, आई मीन प्रीवियस रेजिस्टेंस पे है ना, हाई पे हाई, इट्स नॉट अ ब्रेकआउट, दिस इज नॉट अ ब्रेकआउट पर से। कैंडल्स देखो अच्छा से नहीं हुआ है, तो इट इज जस्ट कंसोलिडेटिंग, नथिंग नेगेटिव राइट नाउ, सिवाय डेली डाइवर्जेंस है, बट उसके अलावा ऐसा कुछ बहुत नेगेटिव नहीं है, लेकिन जस्ट कंसोलिडेटिंग आई थिंक। तो इसमें अभी कुछ एंट्री, फ्रेश एंट्री के लिए कुछ नहीं है। एस्थर, एस्थर यस, मंथली में बुलिश डाइवर्जेंस था एंड इट्स फाइनली गॉन हायर, मंथली फिनिशिंग ऑन हाई एज वेल, लुक्स प्रीटी गुड। एंड यस, वीकली में 012 था, तो टारगेट तो हो गया 61.8 का, बट दिस लुक्स नाइस, दिस लुक्स नाइस एज अ लॉन्ग टर्म थिंग ऑल्सो, आई थिंक इट कैन गो हायर। यप। एनी टेक्निकल फॉर आईपीओ? आईपीओ का क्या टेक्निकल होगा था यार, डेटा ही नहीं होगा, सो देयर इज नो टेक्निकल फॉर आईपीओ, आईपीओज, है ना, because there's no historical data, so technical analysis is all about historical data, so you can't really do anything about it. All right, thank you very much guys, have a great weekend for whatever's left, and Wednesday is a trading holiday, so take that into account. Enjoy your week. Thank you very much, I'll see you later. Take care, bye bye.